जी, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दूसरी बात, आपसे मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछली बार पुणे में आप लोगों का जो कार्यक्रम था उसमें कुछ अनदेखे कारणों से जो पहले पता नहीं थे, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, तो मैं बहुत आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब ये वास्तविकता है कि आज संकट की घड़ी, देश के सामने संकट की घड़ी है, पूरी मानवता के सामने संकट की घड़ी, और हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में अभी हमारे पास वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमें ये भी नहीं मालूम है कि ये कितने हफ्तों में, कितने सप्ताह में इसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या होगा, वो भी हम नहीं जानते हैं। और आप दुनिया में जितने विशेषज्ञ हैं, ख़ास तौर से आज अखबारों में चाइना के वुहान के एक डॉक्टर हैं, उनका इंटरव्यू छपा है, साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि आप इस पर कैसे नियंत्रण कर पाए हैं, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड ब्रेकिंग द चेन थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग, यही एक सबसे प्रभावी माध्यम है जिसके ज़रिए इसको रोका जा सकता है। और हमें इस बारे में हम जितना भी चिंता करें कम है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि यूरोप के देशों में, जहां हमारे यहाँ से ज़्यादा सुदृढ़ स्वास्थ्य की सुविधाएं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जहाँ जिनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट हमसे ज़्यादा है, उनके यहाँ पे चूँकि उन्होंने एहतियात नहीं बरती, they did not take enough precautions, so things are going almost out of hands. In India, we are fortunate that government has been vigilant right from the beginning, and Prime Minister has taken proactive measures. First, Janta curfew was announced, sort of testing, and then a day later, a complete lockdown of the country was declared. Because that is the only option which is available to us. So in this hour of crisis, all of us have a duty to strictly adhere to the requirements of social distancing, to the requirements of the lockdown, and that is the only way we can fight effectively the threat of pandemic coronavirus. Now, some of our friends have asked me some questions. The first question is, how can people of diverse ideological leanings across the political spectrum be brought together to fight for a common cause, especially in the face of diversity, in the face of adversity? You know, all these things have become immaterial, whether it is ideological differences. In fact, this threat has transcended not only ideological differences, but even national boundaries. This is a threat which is facing the entire mankind, the humanity. As Indians, I feel, as Indians, we have a special responsibility. Why? Because our civilizational legacy teaches us not only to be responsible for ourselves, but to be responsible for everybody. It was our seers, our sages, who had envisaged
समुद्र पर्यंत पृथ्विया एक राजा. There should be one administration, all the land mass up to oceans, seas. There should be one administration. Now this one administration does not mean one government. This means, try to think about it, try to read between the lines. What has been asserted is, what has been envisaged is, not only just an international organization, but very, very constructive, very positive international cooperation of the whole mankind. Whenever you are faced with the kind of threats which we are facing today. So I think that today ideological differences, they have no meaning. It is not sparing anybody. Secondly, well, there may be people, question has been asked whether some people are trying to break national unity by using name of COVID-19. I don't think we should take notice of any irresponsible utterances. Today we should be very focused. And the focus is that we have to save our people from the ill consequences of the coronavirus. At a time when we do not have vaccine, we do not have full scientific data about its pattern of behavior, and the only option which is available to us is social distancing and breaking the chain. Then the next question is, the whole world is fighting against coronavirus. Meanwhile, some people in our country have stated that there are religious factors responsible. I feel, as I said in response to the earlier question, these irresponsible utterances, they do not deserve to be entertained. Yes, the fourth question by Aishwarya Patil ji is that can a coronavirus pandemic trigger a global economic crisis in 2020, including an economic recession? Yes, that is obvious that it will have very serious consequences, and it has already started impacting the world economy. So, but what the consequences will be, that assessment can be made only after we have crossed the bridge. We have dealt with this threat. एक सवाल तुषार जी ने पूछा है कि देश का अल्पसंख्यक समाज, खास करके स्टूडेंट्स, जिनके मन में कुछ राजनीतिक संगठन केंद्र के खिलाफ भय पैदा कर रहे हैं, जैसे सीए के खिलाफ हुआ जामिया आंदोलन, तो आपको ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को सच में डरने की ज़रूरत है? मैं मानता हूँ कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है. हमारे देश में कानून का राज है, हमारे देश में संस्थाएं हैं, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है. किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है. सीए को लेकर बेशक गलतफहमियां फैलाई गई हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाएगा, और पता चलना शुरू हो गया है. वही लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो खुद मैंने उनको बोलते हुए सुना है कि असल समस्या सीए नहीं है, असल समस्या दूसरी बातों को लेके है जो काल्पनिक हैं, जो अभी तक जैसे एनपीआर है या जो रजिस्टर है उसको लेके हैं. वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, कोई उसके बारे में जानता भी नहीं है कुछ. लेकिन मैं इसमें विस्तार में जाने के बजाय बस आपको एक बात कहूँगा कि भारत में, और फिर मैं पलट के आ रहा हूँ, कि जो हमारी विरासत है,
हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज है। हमारी सिविलाइजेशनल हेरिटेज में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की कोई कल्पना नहीं, हमारे संविधान में भी कोई कल्पना नहीं। इसीलिए आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे मुकदमों में ये बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा संविधान इस बारे में कुछ बताता नहीं, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर लंबे समय तक विदेशी राज रहा है, ऐसी नीतियां, ऐसे कानून बने जिसमें देश के लोगों को बांटा गया, वो उसने हमारी सोच को प्रभावित कर दिया। तो संविधान में एक दो प्रावधान ऐसे हैं, किसी को बताया नहीं गया है कि कौन अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर कोई अपने आप को अल्पसंख्यक समझना चाहता है तो उनको एक एश्योरेंस दे दिया गया है। तो आप अपने साधनों से शिक्षण संस्थाएं बनाइए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये अधिकार हर किसी को हासिल है। उसमें अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल कर दिया गया है, लेकिन किसी समुदाय का वहां पे कोई समुदाय विशेष का कोई 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 जिक्र नाम नहीं है किसी का भी। तो ये मेरे अपने ऊपर है कि मैं अपने आप को, इस देश का संविधान इस देश के हर नागरिक को बराबर के अधिकार देता है। मैं गर्व से कब अनुभव होता है मुझे कि मैं भारतीय हूं। अगर मैं अपने आप को अल्पसंख्यक मानने लगूं तो फिर मैं अपने आप को कम समझूंगा, फिर गर्व की भावना नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें और आपको सबको मिलकर काम करना है कि हर भारतीय अपने आप को, संविधान उसको बराबर का नागरिक बनाता है और उसके अंदर गर्व की भावना आनी चाहिए कि मैं भारतीय हूं। उसके बाद ये छठा सवाल हमारे स्वप्निल जी ने पूछा है, जो मुझे लगता है कि पहले प्रश्न से मिलता जुलता है, कि जिसमें आपने कहा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट नेशनल यूनिटी ड्यूरिंग क्राइसिस, सीइंग द करंट सिनेरियो इन अवर कंट्री। You know, not only during the period of crisis, even otherwise, it must be clear in our minds that if we want to go ahead, if we want to develop our society, if we want to march on the path of progress, if we want to make the lives of our people comfortable, then the only way open for us is very strong national sense of national unity. And why national unity is not a difficult task in India? In India, it is not a difficult task. It is not beyond our strength. Why? Because the Indian civilizational heritage gives us the strength. In fact, it prescribes for us to accept and respect diversity. And since the beginning of our civilization, we have believed in respecting and accepting diversity. All over the world, it was either human beings, they needed some basis for the organization of the society. So either it was religion, or it was race, or it was language, or it was color of the skin. But in India, we have, right from our scriptures say, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्री चैव दक्षिणम वर्षभ तद भारत नाम भारती यत संतति. The only criterion which we adopted was we identified the landmass right from Himalaya down to the sea. This is India, and all those who live here, who are born here, they are the children of India. Today we can call them citizens of India. So this unity, not only at the time of crisis, this unity is essential in every situation and every circumstance, and unity in India is not a difficult task. Why? Because our unity is not based on uniformity. Our unity is based on creating harmony, on unity in diversity. We respect diversity, therefore we cannot and we should not have any problem in strengthening our national unity. एक सवाल पूछा है कि भारत के बाहर के दुश्मन शत्रुओं के समान या फिर उससे भी ज़्यादा अलग अलग विचारधाराओं
से प्रेरित होने वाले देश के अंतर्गत शत्रु भी राष्ट्रीय एकात्मता के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। ये आने वाले समय में देश के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है। ये इस तरह के अथर्व कुलकर्णी जी ने ये सवाल पूछा है। अथर्व जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बारे में जो भारत की जो क्षमता है अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को, अपने आदर्शों को बचा के रखने की, उसको कभी कम करके मत आंकिएगा। हजारों साल के विदेशी राज ने भी हमारे ऊपर राजनीतिक तौर पे भारत को गुलामी इतने साल तक चली, लेकिन ये भारत की क्षमता है और ये हमारी संस्कृति से आती है कि जहां भारत के मूल्य, भारत के आदर्श, भारत की का जो जिसे कहेंगे ना जीवन शैली, वो कहीं प्रभावित नहीं हो सकी। इसलिए अपने आप में विश्वास रखिए, अपनी संस्कृति पे विश्वास रखिए और ये मानिए कि ये जो मौसमी हवाएं चलती हैं, जैसे आज पेंडेमिक है, अब ये हर वक्त नहीं रहने वाला है, ये निकल जाएगा। भारत की पहचान, ध्यान रखिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, भारत की पहचान मध्यकालीन युग से भी पहले से ज्ञान के केंद्र के रूप में होती है। मध्यकालीन युग में हमें गुलामी झेलनी पड़ी, लेकिन अब दुनिया में ज्ञान का युग है। ज्ञान के युग में भारत को आगे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान हमारे वैभव से नहीं बताती, हमारी बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बताती, हमारे पैसे से नहीं बताती, हमारे सैन्य बल से नहीं बताती, बल्कि हमारी पहचान दुनिया में है कि भारत ज्ञान का केंद्र है, भारत बुद्धिमत्ता का केंद्र है। इसीलिए भारत के लोगों ने नहीं, अकेले बाहर वालों ने भी ये माना है कि दुनिया में जितनी सिविलाइजेशंस थी वो शायद हमसे भी और बड़ी रही होंगी, लेकिन वो खत्म हो गई और भारत की संस्कृति की निरंतरता बनी हुई। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने देश के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने मूल्यों के ऊपर, अपने आदर्शों के ऊपर। ये छोटे मोटे संकट आते हैं, इससे निपटना कोई मुश्किल बात नहीं होती है, तो मैं कोई बड़ी चुनौती नहीं मानता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज, ये राधिका पुरोहित जी का प्रश्न है। In the last few days, we have noticed some people debating over Jawaharlal Nehru and Narendra Modi by comparing the hospitals and the Statue of Unity. According to me, both are good in their own way. What is your opinion over this comparison? I totally agree with you. And secondly, I would like to say that neither Pandit Jawaharlal Nehru should be confined only to the hospitals. He has a bigger vision. Nor Shri Narendra Modi be identified only with one statue. Shri Narendra Modi has a much larger vision. And we can proudly say, if we can say proudly about our leaders of the first generation, that they were very careful and they were very committed to develop the institutions. Similarly, we can say with great pride that our Prime Minister is totally committed to take India forward, to ensure that the benefits of the development not reach only all sections of the society, but each individual citizen of India. So I agree with you. In the time of crisis, we can promote global competition by producing capable workforce with the help of Skill India programs. Shri Siddharth Girme, you are absolutely right. Not only in this time of crisis, even otherwise,
We should always remember that India has the largest young population, and many countries in the world, they are facing this problem that their younger population is comparatively small. And there are, now we are living in an age where most of the works are going to be done by the robots, by artificial intelligence. We are going to have tremendous amount of data of biotechnology, but still there will be some areas, say for instance, taking care of the older people, taking care of the, I'm not talking of the operation in the hospital, but taking care of the patient who is in the hospital. There are certain areas where human involvement will never become obsolete. So, and India has this young population. Therefore, we must realize that we have an important role to play in the days to come. Not only here, but maybe all over the world. Then the next question is, from many days we are seeing that people across the country are protesting against CA NRC to save constitution of this country. But in this corona crisis situation, these same people are not coordinating well. How do you know? Now I think we need not discuss this issue in detail, because they have been made to leave the place of the protest, Shaheen Bagh people, and now this awareness is increasingly coming that everybody is everybody, each one of us is faced with this threat, and any person who does not take enough precaution can become a source of danger to other people as well. Therefore, we must hope, and we must do whatever is possible, whatever is within, whatever is possible, that we are able to secure cooperation of everybody. ये सचिन शितोले जी ने सवाल किया है कि कुछ लोग बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं कि एनआरसी रब की एनआरसी लगी है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, डोंट मेक स्टूपिड पीपल फेमस बाय डिस्कसिंग देम। There always be elements, discordant voices. Learn the way we learn to do what is essential. We must also learn to ignore what is absurd. Then Shri Yogesh Birajdar has asked, according to you, how dangerous is the communist ideology for a country like India? This is not the time to discuss these things. I have already told you that, we have a great civilizational legacy. Charvak was born in this country. He rubbished everything which Indians held to be sacred. But nobody tried to humiliate him. People of this country did not accept what Charvak was saying, but they had great respect for his cerebral power, for his intellect, for his brains, and even he was called person who did not find many subscribers to his ideology. He was described as Mahatma Charvak. Therefore, the differences of ideology, we should never allow them. We have a right to stick to what we believe in. And one thing I tell you, I believe in this totally, that by respecting your views, actually I ensure that my views are respected. By respecting your beliefs, I ensure that you will respect my beliefs. Therefore,
we should take them as differences. But हिंदी में बहुत अच्छा है कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए. Then Shri Shubham has asked me, it's very important for all citizens of India to have patriotic sentiments and nation first feeling when the nation is into deep crisis. But during such a national crisis, some people are seen thinking narrowly of their own particular circle. And yes, this kind of people are there. These people are there, but do not allow them or their utterances or their statements to distract us from our own path. We must, with conviction, there is no need to even if first of all, they are not strong, but even if they are strong, we are not going to yield. But we should not allow them to distract us. आज के समय में युवाओं के मन में राष्ट्रीय एकता का महत्व बढ़ रहा है या उन्हें गुमराह किया जा रहा है. You know, I have already told you, I think that people are becoming more aware, and more aware of the importance of the national unity. But still, the discordant voices will be there. The disturbing elements will be there. But as I said in response to the earlier question, these discordant voices should not succeed in distracting us. We must keep on marching to the goals which we have set before ourselves. Thank you very much.